Presented by Reliance Foundation. In partnership with Hindustan Times. Outdoor partner. You're watching one of my most favorite programs, Real Heroes 2013. One which inspires me, ignites me, revives hope in all of us. Here are brave women of this country who are actually unsung heroes, not seen heroes, but the real heroes at the grassroots level. Let's visit them and get ourselves inspired and charged to be one of them. बच्चों को शिक्षित बनाना पड़ेगा। जब तक वो बच्चे इंसान देशवासी नहीं शिक्षित होगा मजदूर, तब तक इन लोग ऐसे ही टकते रहेंगे। जो दंगा करने वाले होते हैं ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, ये तो दंगाई अलग ही लोग होते हैं। सभी परिवार वाले यही जानते हैं कि एक लड़की होता है, एक लड़का होता है। जब कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसके अंदर दोनों गुण हैं, तो परिवार वाले उसको सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाते। From an illiterate tribal woman born at the cusp of freedom to a woman leading the education revolution amongst tribals in Orissa, Tulsi Munda's story is an example to all of us that hardships can be overcome. For a little girl born at the cusp of freedom in the tribal belt of Orissa, life was never going to be easy. Like thousands of other Adivasi children in the mining town of Keonjhar, Tulsi didn't go to school. She sifted iron from the mineral-rich soil for just 2 rupees per month. गरीबी के कारण से पढ़ाई नहीं किया। अपने गांव में स्कूल नहीं था और इतना पढ़े, इतना जो जहाँ पर स्कूल है 4 धान देना पड़ता था। और हम लोगों का टाइम में तो ऐसा लड़कियां पढ़ने का इतना कोई ध्यान नहीं देते थे। It was agreed to learn, to study, to make something of herself that set Tulsi Munda apart from other child laborers. मेरे से और एक छोटा भाई था, वो पढ़ता था। वो जब हर रोज जितना सीखता था मैं उतना ही सीख लेती थी, कहीं बालू में खेलते हुए भी। It was the same desire that led a young feisty Tulsi to follow Vinoba Bhave and his Gandhian followers who would go village to address tribal problems. Inspired by the Gandhian philosophy of Dhudan, Tulsi, just 19, approached the Gram Pradhan to lend her the use of a place of worship. She wanted to start a night school for children of tribals. ऐसा कैसा सुना सुना लगता था, जैसा बच्चे ये जंगल था जो देवी स्थान था, इसलिए बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे और कोई नहीं रहते थे, सब चला जाते, आकर के वो ले जाते थे और रात को सोने के लिए मैं अकेले ही सोती थी। The open-air night school under a dim lantern with a handful of children started in 1961. The attendance was sporadic. The Adivasis didn't understand why their children need to study. Tulsi went door to door. कोशिश यानी संघर्ष यानी कसौटी यानी परिश्रम करना पड़ता था। कैसा उनके बीच जाना, उनको लाना, शिक्षा के प्रति उनको आक्रोश श्रद्धा लाना। And it was not just education, but Tulsi Munda also fought for the rights of the tribal girl child. अच्छे अच्छे लड़कियों को शराब को भर्ती करके जंगल उठा करके ले लेते थे। ये लोग, ये आदिवासी लोग कोई विरोध नहीं करते थे। वही देख करके मैंने यहाँ अचानक आकर के आंदोलन किया। मेरे को मार देने के लिए भी उनका योजना चलता था। What started with a few toddlers 40 years ago multiplied to a pool of 20,000. In addition to the Adivasi Vikas School, Tulsi helped establish 16 other schools in areas that were destroyed by the mines.
Currently, she has over 500 students, almost half of whom are girls, and her school provides education up to class 10. Thanks to their appa, the children of this school not just study here, but also live in this campus and lead a meaningful life. हमेशा हर लोगों का पास घर होना चाहिए, हर रोज खाना मिलना चाहिए, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए और स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए. But their appa, clad in a white sari, barefoot and always with a warm smile, continues to live her life with utmost simplicity. जितना कर सकूं करते ही रहेंगे, लेकिन ये भी तो है, उम्र भी तो है, फिर जमाना भी तो है, भगवान का इच्छा भी है. Keonjhar has been exploited by the rich for its mineral ore, leaving the tribals with nothing. Countless suicides here are still forgotten, and children continue to be sold as laborers. Little boys still grow up with lungs full of dust left behind by the trucks, and children continue to be sold as laborers. Little boys still grow up with lungs full of dust left behind by the trucks that have flattened their land. Appaji worries about their future. बच्चों को शिक्षित बनाना पड़ेगा. जब तक वो बच्चे इंसान इस देशवासी नहीं शिक्षित होगा मजदूर, तब तक वो इन लोग ऐसे ही टकते रहेंगे. India is both modern yet medieval. When you have prevalence of child marriages, India is still medieval. But we got modern Sangeetas. We got young teenagers who are fighting against child marriage, refusing to be Balika Vadus. Here is Sangeeta going around not only saving herself, but saving her friends too. This is modern India. Every second girl in India is married underage. India has the highest number of child brides. UNFPA says 140 million child marriages may take place between 2011 and 2020 across most developing nations. This means, on an average, 39,000 child marriages will happen every day. It is this scary statistic that 16-year-old Sangeeta Bauri wants to change. She won't allow any child marriage in West Bengal's Purulia district, not under her watchful eyes. महीने में हम लोग 50 लड़की है इस मिছিল में. महीने में हम 3-4 बार निकलता है. गांव के सारे लोग को हम बता देना चाहते हैं कि लड़की को कम उम्र में शादी नहीं करने का. 4 years ago, Sangeeta herself was on the verge of becoming a child bride. Her grandmother wanted to marry her off just because she was the oldest girl in the family. It was in the local child labor school that Sangeeta learnt that marrying off a girl before 18 is illegal. हमने घर वालों से बोला कि हम अभी शादी नहीं करेंगे, हम अभी पढ़ेंगे. तो घर का दादी मम्मी पापा सब भी हमको डांटा था कि क्यों नहीं शादी करेंगे, तुम तो जवान हो गई. हमने बोला हाँ हम जवान हो गए, लेकिन मेरा उम्र नहीं हुआ शादी करने का. Her mother's plight made Sangeeta more aware, and she resolved that she won't end up like her mother. The misfortune had to be wiped off. मम्मी अनपढ़ है, मम्मी का हक मांगने के लिए पिताजी के साथ चाहिए. ये देख के हमको पता चला कि हम स्कूल में पढ़ेंगे, अपने पाँव में खड़ा रहेंगे, तब हम शादी करेंगे. After saying no to her own marriage, Sangeeta has now stopped almost 4 child marriages. But she has had to face the ire of the locals for standing up against them and asking other girls to join her. Sangeeta grew up seeing how alcoholism destroyed lives in her village. Almost every home had an alcoholic. In her case, it was her father. अगर आदमी दारू पी के आएगी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. घर में सुख शांति सब छीन जाता है. अगर पापा दारू पी के आएंगे तो बच्चा कैसे लिखेंगे पढ़ेंगे. Sangeeta's battle against child marriage and alcoholism is on. These may be just baby steps, but at least someone has stepped out of the archaic tradition, and now there's no looking back.
We'll bring you more stories of courage and determination on the other side. Time for a little break. Don't go away. Godhra riots left behind huge carnage, torn communities, widows, orphaned, communal disharmony, burning homes. And from this carnage emerged a real-life hero. She restitched the Hindu-Muslim communities, torn apart by the carnage, a transformer and a reformer. Meet Latifah. The 2002 Godhra carnage transformed Latifah Giteli from a housewife to the driving force behind communal harmony. जो दंगा करने वाले होते हैं ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, ये तो दंगाई अलग ही लोग होते हैं. As Godhra burned, Latifah found her calling in life at the relief camps. वो उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनके माँ बाप छूट गए थे. इन्होंने मेरा दुपट्टा पकड़ लिया कि खाला हमको थोड़ा पानी पिलाओ, खाला हमने 3 दिन से पानी नहीं पिया, हमको पानी दो. तो मेरे को बहुत ही लगा कि भाई इनको, ये मेरे रिश्तेदार नहीं पर इनकी मदद करनी चाहिए. फिर मैं वहीं पे रुकी, इनके लिए पानी का बंदोबस्त किया, खाना पीना वो सब किया. फिर मैं इनके साथ ही जुड़ी, ऐसी जुड़ी कि मैं वहीं पे रुक गई. That's when Latifah registered her organization Al Fazl Educational and Charitable Trust with a focus on communal harmony. तो हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम चलाए, मेहंदी कंपटीशन रखा कि हिंदू बहनें मुसलमान बहनों के हाथ में मेहंदी लगाएगी और मुसलमान बहनें हिंदू बहनों के हाथ में मेहंदी लगाएगी. But stepping out and working for Hindu-Muslim unity in a volatile environment, she faced immense opposition and threats. ऐसे तो हम तुम्हारे साथी हैं. But despite that, she carried on, reaching out to women of both communities and empowering them through employment in sales jobs. ऐसे तो हम तुम्हारे साथी हैं. But despite that, she carried on, reaching out to women of both communities and empowering them through employment in sales jobs. मेरी परिस्थिति बहुत खराब थी. उस समय देखा और बोला कि तुम काम करना इच्छा चाहते हो तो ठीक है, हम तुमको काम देंगे. लेकिन मैं घर से कभी बाहर नहीं निकली. तो लतीफ़ा बहन बोले कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और मैं तुमको बताऊंगी कि कैसे काम करना और किस तरह से. Latifah also runs a stitching center where young school dropouts are given vocational training. But while Latifah's transformation from a housewife may appear as a fairy tale, she faced her own set of challenges, those that almost made her withdraw from her work. 2004 में मेरे शोहर को 1 साल जेल में बंद कर दिया था. इनके ऊपर 4 केस डाल दिए थे, बम केस. जब इनको जेल में बंद कर दिया तो बहुत नर्वस हुई थी. 1 साल तो हमने बहुत मुश्किल से निकाला. हमने, मेरे मुंह पे समाज वाले बोल के जाते थे, ये बाहर निकली है ना, इसके लिए इसको ये भुगतना पड़ा है, ऐसा मेरे को बोल के जाते थे. The court later found her husband not guilty and acquitted him, further strengthening Latifah's belief in her work. Latifah says her biggest achievement is the English medium school she runs for poor children, educating them almost for free. Today, Latifah symbolizes the change in Godhra. Her undying spirit is slowly changing mindsets through education and employment. She hopes to bring Godhra on the world map once again, but this time for the right reasons. Meet my next real hero, Rina Biraha. She's a transgender, a woman in a man's body. Instead of being jibed at or being cowed down at snide remarks, she did not give up. She walks the streets, educates herself, transforms society. She organizes games to show that the society has third strength. She's proving that she's no less than anybody. On the contrary, she's got both.
the strength of the man and the heart of a woman. They say it's a man's world. But what do you do if you feel like a woman trapped in a man's body? The taunts, the jeers, and the humiliation. Ravina Biraha has experienced it all. She prefers to define herself as the third gender. एक सामान्य आदमी यही सोचता है कि संसार में लड़की और लड़के ही होते हैं, तो जब कोई थर्ड जेंडर के पर्सन को देखते हैं तो वो बहुत अलग सा व्यवहार करने लगते हैं और उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है। कई जगह मैं डिप्रेशन में भी गई और कई जगह तो ऐसा हुआ कि आत्महत्या तक करने का भी विचार आया था। जैसे ही परिवार वालों को पता चला, जब मेरी पहचान हुई तो मेरे साथ बहुत भेदभाव हुआ। Ravina chose to fight back at an early age. She left her village and family in Chhattisgarh's Mahasamund district, studied at a free boarding school and did her graduation. While working at a local newspaper office, she got in touch with others from her community and formed the Chhattisgarh Mitwa Sankalp Samiti in 2010. हमारे समुदाय के अंदर में बहुत सारी क्षमताएं हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का संरक्षण नहीं होता। तो मितवा का सिद्धांत यही है कि समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हो। Last year, Mitwa created a buzz by organizing India's first ever national third gender sports meet. Almost 200 sportspersons from 9 states participated in it. Rani was one of them. ये जो नेशनल लेवल का जो स्पोर्ट्स हुआ, ये काफ़ी अच्छा हुआ था छत्तीसगढ़ में, और लोगों ने ये जान भी लिया कि नहीं, किन्नर कम्युनिटी या थर्ड जेंडर कम्युनिटी और भी कुछ कर सकती है, बहुत बेहतर कर सकती है और लोगों की अपेक्षा। But it's not all fun and games. Sometimes the biggest challenge for a third gender person is life and love itself. When Kanchan's boyfriend of 4 years suddenly deserted her one day, she was shattered. मानसिक रूप से तो बहुत ही परेशान थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किसको बताऊं अपनी प्रॉब्लम। फिर उस बीच में रवीना से मेरी मुलाकात हुई थी और रवीना फिर मुझे बताई कि मैं कोर्ट में और थाने में जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हूँ। कंचन ही क्यों, बहुत सारे रेप की घटनाएं और क्राइसिस होते हैं, और जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस संवेदनशीलता के साथ नहीं सुनती, ना ही रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार होती है। बाकी जगहों में एफआईआर लिखने तो हमको जब भी रिपोर्ट लिखाना रहता है तो हमको पूरे ग्रुप के साथ जाना पड़ता है, एक आक्रोश वहाँ पे व्यक्त करना पड़ता है। Acceptance, or perhaps the lack of it, mostly derails the life of a third gender. So Ravina regularly counsels the family not to shun their children. लड़का हो या लड़की, कुछ इंसान तो है, क्या करेंगे, पैदा किए हैं, फेंक थोड़ी देंगे भाई, जो भी है जैसा है। हमारा बच्चा है, लेकिन बच्चे को भी मेरे बारे में सोचना चाहिए, है? कम से कम समय से आए, समय से जाए, कैसे बच्चा। Today, her organization has got voter ID cards made for almost 500 people. Thanks to Mitwa's advocacy, Chhattisgarh is the first state in the country which has issued special labor cards to 200 members of the community. According to a rough estimate, there are about 5 to 10 lakh people belonging to the third gender in India, and Ravina is fighting for their and her own identity. If we all somehow identify the real hero amongst us, India would be a demographic dividend. Or else, India would be a demographic bomb. What do you want to be? A dividend or a bomb? You could visit the CNN IBN website called realheroes.com and share it amongst your community, within your own family. Watch this program to be motivated and charged.